तो अभी मैं हूँ गगनबावड़ा में। तो यहाँ पे मस्त काउंटिंग हो रही है, लेकिन सामने से काफ़ी सारे ट्रक्स आ रहा है, तो आई एम कीपिंग माई स्पीड मिनिमल में भी आप कॉर्नर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्पीड ज़्यादा ही रखना पड़ता है कॉर्नरिंग के लिए। योर लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कॉर्नर्स। ये आप समझ के चलाओगे तो life will take you to so many corners and you will enjoy your life. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. सामने से जो भी गाड़ी आ रहा है उनको भी अपना एपेक्स पकड़ना पड़ता है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपको ही जगह मिलना चाहिए और आप ही रोड में मस्ती करोगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना। तो रेस्पेक्ट the person who is coming from front of you. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. यहाँ पे काफ़ी रास्ता ख़राब है। ये देख रहे हो आप, अगर आप रास्ते का रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो ये हाल होगा। देख रहे हो, एक दिन मरना ही है, लेकिन जानबूझकर गलती करके मस्ती करके मरना डजंट मेक सेंस टू मी। यहाँ पे आते ही कान बंद हो जाता है और मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know you are flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. ये क्या उड़ रहा है? कोई गाड़ी तो नहीं गया नीचे? यहाँ से कोई अगर नीचे गिरता भी है तो मुझे नहीं लगता किसी को पता चलेगा, unless and until you leave something behind. Didn't even get to cross. I said I'm
I'm moving too far. Get to glass. राइडिंग इज़ सच ए ब्यूटीफुल पैशन, बट देन काफ़ी सारे जो यंगस्टर्स है राइडर बोल के पता नहीं कि राइडिंग को कुछ और ही लेवल में ले गया है। हेलमेट पहनेंगे तो बाल खराब हो जाएगा। राइडिंग शूज़ नहीं पहनते, राइडिंग पैंट्स नहीं पहनते, राइडिंग जैकेट नहीं पहनते, एंड दे एक्सपेक्ट देयर मशीन्स टू रीच 150 to 100 की स्पीड। भाई साहब गाड़ी तो ले जाएगा आपको, लेकिन गलती से कुछ हो जाता है तो आपको लेने के लिए और कोई आएगा, फिर आप धरती पे जिंदा तो बचोगे नहीं। It's all about giving respect and taking it back from your machine. If you give respect to your machine, it will respect you as well. ये रास्ता भी काफ़ी ख़राब है और काफ़ी ख़तरनाक भी है। यहाँ पर मैं 2015 में जब आया था तो एक लाइव एक्सीडेंट देखा था। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that?